Hi guys, my guest for today's episode is Ravi Saxena. He's the founder and CEO of Wonder Chef. I think Wonder Chef as a brand needs no introduction. It's absolutely a household brand today. Welcome Ravi, welcome to Game Room. How does it feel to build a brand which has become a household brand in no time? Thank you, Swati. First of all, an honor to be here. I've been watching Game Room and wondering when would mera number kab aayega. So, it's a privilege to be here because I think you guys do it so well. And it's very exciting to hear of the journey of founders, CEOs, and other people that you have, very interesting people that you have interviewed. Sometimes I have to pinch myself that is Wonder Chef really a brand? Is it already a brand? A few years ago, about 5 or 6 years into the business, somebody said, "तुम तो brand बना रहे हो ना?" And had not even thought of it that way. My whole passion was that I want to bring good quality products for cooking into the Indian kitchen, because having built a few other businesses which were related to food earlier in my career, I knew the impact that food has on your health. And as you know, India is the lifestyle disease capital of the world, with diabetes, obesity, angina, heart trouble. And 80% or 90% is to do with the food we eat every day. People don't realize that. So, my vision was to empower people to cook healthy and conveniently, because if it's not convenient, people will not do it. I have spent a lot of time in France and Italy with my partners, with the companies that I worked with or the businesses I created. And I could see, and these two nations, as you're aware, France and Italy are on the forefront of cooking. They have the most sophisticated and most popular food around the world. And I could see the kind of equipment people use at home day to day. And I would wonder, why should this not be in India and empower people to cook better? So that was my mission. And it was never about, I didn't imagine that as a single person I could create a brand or become a very large company. But I thought, okay, I have some skill set in building different concepts, building different companies. Let me use it for, let's say, good of the society at large. So after 5 years or so of doing that, somebody told me, "आप तो brand बना रहे हो ना?" And it hit me, in a very positive way that, wow, इसका मतलब कहीं ना कहीं it's creating an impact. And yeah, today I can proudly say that the brand is very well known. I mean, we go out and speak to a person on the street, they would know typically what Wonder Chef is, what it stands for. And people say proudly, I am also a Wonder Chef customer. I have also invested in Wonder Chef, not in my shares, but in the product. And they see it as an investment. And I feel very happy about that. So, जब आपने कंज्यूमर ब्रांड बिल्ड करना चालू किया था, देन कंज्यूमर ब्रांड्स वर नॉट बिल्ड द वे इट इज़ बिल्ड टुडे. आई थिंक इन द पास्ट, पोस्ट कोविड, कंज्यूमर ब्रांड्स आर बिल्ड इन अ वेरी वेरी डिफरेंट मैनर. So, what has been your landmarks? How have you gone about building the brand? Because back when you were building brand, D2C channel did not even exist, which is the first port of call today for building any consumer brand. Because I have struggled a lot with it. And not only me, anybody who built business in those times and before us have struggled with that. So I started Wonder Chef around 2010. There were a couple of challenges. So it was immediately after the global financial crisis, which means the mood in general was down, consumerism was down. Secondly, one could not expect any funding at all. Funding had just disappeared from the market. A few tech companies were getting funded. Otherwise, the whole PE or venture capital market had dried up. And thirdly, there was no real distribution in India. And you know how we used to say, लीवर्स तो मार्केट का दादा है, या आईटीसी तो 10 मिलियन शॉप से बेचता है. So it's not just because of their products, but in India, being a brand meant distribution. If you have cracked the distribution, if you are there in thousands or lakhs or millions of outlets, depending on the kind of product you are, then you are a brand. और वो करना बहुत ही मुश्किल होता था. तो मैं हमेशा कहता था कि यूएस में देखो ब्रांड बनाना कितना आसान है. इफ़ यू हैव अ गुड प्रोडक्ट, यू कैन गो टू 5 stores. यू गो टू वॉलमार्ट, टेस्को, कॉस्टको, बेड बाथ बियॉन्ड, और आपका ब्रांड बन जाएगा. यू विल बी देयर इन मोर देन 10,000 आउटलेट्स, लार्ज फॉर्मेट आउटलेट्स. और इंडिया में 1,000 आउटलेट्स भी अगर आपको अपनी प्रोडक्ट रखवानी है, so it will be so much of an effort, and you have to create the brand through mass marketing. And it was a chicken and egg situation, because how do you do mass marketing when you don't have money, or your sales are not there because you are a young brand?
And unless you are doing mass marketing, you are on TV or print, a dealer, outlet, or a shop would not keep you. This was a classic chicken and egg, which is why over the years, if you see in any industry, any consumer industry, whether luggage or consumer products or our industry, which is kitchenware, there were hardly any new brands. The old brands which have been around for 50, 60, 70, 100 years, they were there. We were the first brand which came in the last 30 years in this industry when we started. We were the fresh new kid on the block. Nobody took us seriously. And I had to chart out my own path. I had some savings of my own. A couple of my friends who were with me in Sodexo when I founded Sodexo in India, and they were foreigners. It was a French company. They saw me building Sodexo over the years, and they trusted me. They trusted my skill set. So they said, look, we would want to participate with you. But they were individuals. It was not VC funds or family offices. So money was always tight. Challenge was, how do I build a business which eventually might become a brand without money, without burning cash, without D2C? And I think that has been the key success story of Wonderchef. So what we did was, first we identified what products we want to do. And I identified 2 products. So non-stick cookware, the quality in India used to be very poor. In 6 months' time, the coating used to come off. And if the coating comes off, it is not healthy. So I said, okay, I will create cookware where I can give a guarantee that even in 2 years, if the coating comes off, we will give free replacement. And it takes engineering, it takes the right kind of investment, right kind of coating, right kind of metals, metallurgy, and processing to create that kind of a good pan, which we did. And then the second thing we made was an iconic mixer grinder, which we call NutriBlend. And today, Swati, it sells more than 200 crores as a single product, so it's continuing to grow. The idea was to create something which is not like a typical 3-jar steel mixer where you do not get to see what is happening inside. You are always confused कि मेरा मसाला पूरा बन गया है कि नहीं, चटनी बन गई है कि नहीं, खोल के देखना पड़ता है, लिड के ऊपर हाथ रख के खड़ा होना पड़ता है कि लिड उड़ तो नहीं जाएगा, right? So I solved 3 problems there. 1, it was compact. 2, it had transparent, unbreakable jars, so you could see what is happening inside. 3rd, they are screw-type jars, so once you fix it, it doesn't fly off. My own team didn't believe that it would work, but I said, look, if the product is good, if it's solving a problem, let's go for it. And we were at it for 2 years, and I started seeing the green shoots, both in cookware, which was premium, it was more expensive, but because it would last, because the food release would be so good, you could cook literally in a drop of oil, they started selling very well, and our NutriBlend started selling very well as well. But how do you take it to the market? And that was your question, that how do you build a brand, how do you take it to the market? Because even if the product is good, कोई रखना नहीं चाहता था. So I said कि चलो प्रोडक्ट अच्छी है ना, हम डेमोज करके दिखाएंगे. और डेमोज करने के लिए हम क्या करेंगे? We will go out to the ladies, because women in India, they carry the heavy burden of cooking at home, and they struggle with lack of good resources in their kitchen. So we said we'll reach out to the ladies, and as people know now, the famous chef Sanjeev Kapoor is my co-founder, my partner, and I had gone to him with this vision कि इंडिया को हेल्दी बनाना है, and he was very happy कि हमने इंडिया को खाना बनाना सिखाया है. लेकिन हमेशा से हमारे दिल में था कि अगर ये खाना बनाने के लिए इक्विपमेंट भी अच्छी हो तो कितना मज़ा आए, तो ये तो इट विल बी ए मैरिज मेड इन हेवन. सो करते हैं चलो साथ में. एंड ही वॉज काइंड एनफ टू लेंड हिज ब्रांड टू अस एंड एक्सक्लूसिव राइट्स. He became my co-founder and partner. And I knew that I'll be able to attract a lot of passionate women to sell our products, to demonstrate our products, because somewhere they would like to be associated with Chef Kapoor. And that's what happened. Not easy. Over our lifetime now, we have signed up about 85,000 ladies in our network. And sometimes people ask me, ये network कहाँ से मिलता है? कहाँ से लिया आपने? कैसे बनाया? And my answer is एक एक करके. Because I remember पहले दिन we invited 10 ladies to our office, 4 landed up who are still with us, and धीरे धीरे एक एक करके. And I remember कि from Chennai to Chandigarh एक फ्राइंग पैन लेके मैं घूमता था कि इसमें अंडा बना के बिना तेल के कैसे दिखाऊंगा. And I used to myself travel and break the egg and बिना तेल डाले दिखाते थे कि देखो रिलीज़ हो गया अंडा, because अंडा is a very sticky thing otherwise. और वो हो जाता था.
फिर ब्लेंडर को हम दिखाते थे कि इसमें एक देखो काली मिर्च का दाना भी कैसे ग्राइंड हो जाता है, अगर आप नॉर्मल मिक्सी में डालो घूमता रहेगा, वो ग्राइंड नहीं होगा। सो इस तरीके से बहुत डेमो कर करके हमने लेडीज़ को इंस्पायर किया, वो हमारे साथ जुड़ी और उन्होंने ये सेल भी करना शुरू किया। सो व्हाट दे डू इज़ दे गैदर देयर फ्रेंड्स, नेबर्स, रिलेटिव्स इन लिटिल ग्रुप्स, दे डेमोस्ट्रेट एंड पीपल लाइक द प्रोडक्ट, दे बाय। So that was the starting point. And the power of the demo is so much that, उसी से ब्रांड बिल्डिंग एक शुरू हो गया। Then I went to modern trade. I went to Shopper Stop, Lifestyle, Hometown, Big Bazaar, और उनको मैंने कन्विंस किया कि देखो आपके यहाँ पे प्रीमियम लोग आते हैं। इंट्यूटिवली एवरी रिटेलर वुड से कि नहीं आपकी प्रोडक्ट तो महंगी है, हम सस्ता चाहिए कुछ, क्योंकि वो तो हम ऑलरेडी बेच रहे हैं ना, फिलिप्स का बेच रहे हैं, बजाज का बेच रहे हैं, आप नए आए हो, आप सस्ता दो। But some people supported us because they could see the quality and they said but आपको इतना ना, ये हमने 100 फुट का एरिया आपको दिया है, इतना किराया लगेगा, मिनिमम गारंटी लगेगा। तो मेरा ना गला सूख रहा था बिकॉज हम उतना किराया अपने पूरे ऑफिस का नहीं देते थे जितना एक एक हमें शॉप इन शॉप का देने की बात थी। फिर हमने कहा चलो देखते हैं क्या हो जाएगा। एंड आई कैन टेल यू इन दीज लास्ट 12-13 ईयर्स एवर सिंस वी हैव बीन देयर, एक बारी भी हमने ऐसा नहीं हुआ कि हमें मिनिमम गारंटी का किराया देना पड़ गया, बिकॉज सेल्स वर always good. Wow. My belief was that a good quality customer, the customer is looking for some difference, that kind of a customer goes to modern trade, to department stores. वो हम वैल्यू सीख करने नहीं जा रहा। कई बार एज प्रोफेशनल्स वी मेक दिस मिस्टेक कि नहीं हमें सबसे सस्ता करना है, सबसे सस्ता लेना है तो वो रेलवे स्टेशन के बाहर की दुकान में जाएगा, वो लिंकिंग रोड पे जाएगा जूता खरीदने, वो क्यों मेट्रो में जाएगा या वो क्यों लाइफस्टाइल में जाएगा। सो देयर पीपल आर गोइंग ऑल्सो फॉर एन एक्सपीरियंस एंड दैट्स व्हाट वी गिव टू देम। We invested in demonstrators. We showed how things can be done magically with our equipment. I mean, today we have 400 products. So over the years, every single year, we kept coming with 25, 30, 40 new products, new concepts that we could demonstrate to the customer that how you can do things better with this. तो वो होता चला गया। फिर उसके बाद we were the first company in our industry to build our own website. जब अमेज़न भी नहीं डिलीवर करता था किचनवेयर इंडिया में, वी बिल्ट आवर ओन वेबसाइट एंड वी समवेयर वर्कड वेरी क्लोजली विद कुरियर पार्टनर्स कि वो कैसे बेच सकें, COD कैसे कर सकें, कैश ऑन डिलीवरी कैसे कर सकें, एंड दैट स्टार्टेड वर्किंग। फिर अमेज़न वाले हमारे पास आए कि हम ये कैटेगरी शुरू करना चाहते हैं, तो आप लोग कर रहे हो ये और तो कोई कर नहीं रहा, तो ये कैसे करें, टूटेगा कैसे नहीं, बर्तन या कुछ ग्लास का है टूटेगा कैसे नहीं, कैसे पैकेजिंग करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं। सो वी बिकेम द फर्स्ट पार्टनर ऑफ अमेज़न फॉर द कैटेगरी, वी आर स्टिल वन ऑफ द बिगेस्ट। सो ऐसे करते करते अलग अलग चैनल्स बनती गई। इन Sodexo आई हैड बिल्ट द गिफ्ट वाउचर बिजनेस ऑल्सो, आई हैड इनोवेटेड दैट। तो मुझे गिफ्टिंग का एक अच्छा ख्याल था कि कैसे होता है। सो वी सेट अप ए कॉर्पोरेट गिफ्टिंग डिपार्टमेंट ऑल्सो इन Wonder Chef. Today almost 10% of my sales come through corporate gifting, because our products are nice, good quality and colorful. So they suit the gifting need and the marriage gifting need specifically. तो वो भी अच्छा चला। A lot of people abroad, lot of Indians abroad want to use our products because बहुत specific solutions देते हैं। So एक बारी I was in Barcelona and I saw a girl carrying NutriBlend. So I said ये आपने कहाँ से लिया? बोलती कि मेरी मम्मी ने मेरे को दिया है कि इसमें जूसेस बना के पीना है और कोकोनट चटनी इसमें बन जाएगी बहुत अच्छी, और कॉम्पैक्ट भी है, तेरे अमेरिका के घर में आराम से आ जाएगा। अपार्टमेंट में रहती थी न्यूयॉर्क में। सो दैट ट्रिगर्ड माई थॉट दैट वाई नॉट मेक द प्रोडक्ट अवेलेबल। सो टुडे वी ऑल्सो एक्सपोर्ट टू अबाउट 20 कंट्रीज़ एंड NRIs के साथ हम बहुत पॉपुलर हैं एज ए बिजनेस। वी ऑल्सो एंटर्ड पुलिस एंड आर्मी कैंटीन्स बिकॉज डिमांड केम दैट हमारे जो जवान हैं पुलिस के और आर्मी के, दे ऑल्सो वांट गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। उनको शौक भी होता है खाना वाना बनाने का, पार्टीज़ भी होती हैं, इनवाइट करते हैं काफ़ी लोगों को। सो वी वांट गुड क्वालिटी स्टफ़। तो वहाँ पे हमें बहुत अच्छा सक्सेस मिला। सो दिस वे वी हैव अबाउट 10 चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड दैट इज़ आवर स्ट्रेंथ। दैट इज़ हाउ वी हैव बीन एबल टू ग्रो faster than any other company quarter on quarter for the last 10 years. Wow, I think it has been a journey of lifetime which you kind of, spoke about. But Ravi, ये hunger कहाँ से आया? Because you were doing well in your corporate, career. Also, मतलब ladies को इकट्ठा करके, product demo करना, door to door जाना, having modern trade open to a new brand would be a very, very difficult thing. So, where did that hunger come, from? What was going in your mind when you were kind of, trying to do this? I think I had seen in my early part of my career that अगर मैं पीछे पड़ जाऊँ किसी कॉन्सेप्ट के तो उसको खड़ा कर ही दूँगा। And while the Wonder Chef journey sounds twisted and
tough and difficult. I can share with you that my first journey, the first company I built in India, was far more tougher. About 10 times tougher, if it's possible. Is it Sodexo that you're talking? I'm talking about Sodexo. So I joined Sodexo after quitting a top banking job. I had been in that job for some time after my MBA. And this opportunity came that Sodexo wants to hire somebody in France so that they will train the person, and after 3 or 4 years, they will send him to India to look at the opportunity. Now, it was a very broad and unstructured description. But I said कि देखो बैंक में तो बहुत सारे ब्रिलियंट लोग हैं एंड सभी अच्छा काम कर रहे हैं, मैं भी अच्छा काम कर रहा हूँ. बट इफ़ आई कैन बिल्ड सच ए कंपनी तो कमाल हो जाएगा. मतलब आई माइट गेट नोन कि इसने बनाई है. सो टुडे इन रेट्रोस्पेक्ट आई थिंक इट वाज अ ग्रेट डिसीजन बिकॉज फॉर श्योर आई एम नोन एज द पर्सन हु बिल्ड सोडेक्सो इन इंडिया. और कितना सीखा वहाँ से. सो मैं फ्रांस गया, मैंने ज्वाइन किया, लेकिन 3 महीने में मुझे समझ में आ गया कि यहाँ तो जो होना है वो हो ही चुका है. दे वर हाईली डेवलप्ड कंट्रीज. आई विजिटेड बेल्जियम, फ्रांस, इटली, स्पेन, इंग्लैंड, जो भी होना था, जर्मनी, हो ही चुका है. यहाँ तो कुछ ज़्यादा है नहीं करने के लिए. एवरीबडी वॉज हैविंग ए नाइस टाइम. सो आई स्टार्टेड इंसिस्टिंग टू द कंपनी कि मुझे इंडिया वापस जाने दो एंड आई विल स्टार्ट द बिजनेस. एंड दे सेड इट्स टू सून. इट वॉज अर्ली 90s. लिबरलाइजेशन अभी बस नाम ही था, उसके एफेक्ट्स आने शुरू नहीं हुए थे. आईटी सेक्टर थोड़ा थोड़ा बनने लगा था. इन्फोसिस का नाम लोगों ने सुन लिया था, बट दैट्स अबाउट इट. सो नोबडी बिलीव्ड दैट इट कुड बी डन इन इंडिया. आई रिमेंबर माई बॉस टेलिंग मी, रवि, इंडिया इज़ अ जंगल. Do you really want to go there and get eaten by the tiger? I said, look, let me go because I have good education. And if I can build Sodexo, we will be the number one. If I can't, it's okay, I'll find another job. But let me go. Let's not waste time. So I came back, and Swati, those were the 2 years, 95, 96, which were probably the toughest of my life. And I think that somewhere built my character also, that how to stay put, how to be patient, how to be resilient, how to fight it out, how to find the solutions. Because in these 2 years, I was totally alone. The company was disbelieving. They never thought anything could be done in India. And I'm talking first of the vouchers business, the meal vouchers, meal coupons, you know. If I told somebody the concept in those days, they would laugh in my face. That why do we need it at all? And these 2 years, I was first lobbying with the government for a tax break on the voucher. Now, you know, lobbying can take 10 years, 20 years. In India, it could be anything. Why should the government give up on a tax benefit to a whole lot of employees and lose tax? But it took me about 1 year working very hard with the central government, with the finance ministry. I was 25 then. So I used to feel very self-important कि बड़े-बड़े नॉर्थ ब्लॉक में, साउथ ब्लॉक में जाके बड़े-बड़े IRS ऑफिसर्स को, IAS ऑफिसर्स को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ that how a meal voucher would be good for the nation, and you know how it would bring parity between large setups where subsidized food is available in a canteen versus smaller offices where you know they don't have the means to eat food. तो हमारा voucher होगा तो वो जाके कहीं से खाना खा सकेंगे. So it was a simple argument, but in 1 year we were successful. अब उसके बाद और ज़्यादा टफ टाइम आया क्योंकि आई वॉज ऑन ए हाई. आई रिमेंबर 13th October 1995 वी हैड दिस सर्कुलर फ्रॉम सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड आई थॉट वाओ, नाउ वी आर इन बिजनेस. 1 साल की मेहनत रंग लाई एंड कंपनी विल सेट अप. एंड द कंपनी सेड ओके, या देयर इज़ ए लॉ, बट इज़ देयर ए मार्केट? सो फर्स्ट प्रूव देयर इज़ ए मार्केट. एंड इन दैट 1 year आई थॉट मैनी टाइम्स व्हाट एम आई डूइंग. माई फ्रेंड्स टोल्ड मी कि IIM अहमदाबाद से निकल के क्यों अपनी डिग्री ख़राब कर रहा है, यू आर जस्ट वेस्टिंग टाइम. एंड देख, बैंक में होता तो अभी तेरी तनख्वाह इतनी हो गई होती और अभी तो VP बनने वाला होता. बैंक्स में VP भी जल्दी बन जाते हैं. सो ये सब होता. लेकिन ऐसे नहीं, अभी बीड़ा उठाया काम का तो करना तो है. सो आई वेंट अराउंड द कंट्री, मेट ए होल लॉट ऑफ HR heads, CEOs, फाउंडर्स ऑफ कंपनीज कि भाई ये एक टूल है जिससे एम्प्लॉयज़ कैन स्टे मोटिवेटेड. एंड आई केप्ट रिफाइनिंग द पिच एंड एवरीथिंग. Finally, I created enough compulsion for the company, enough conviction for the company कि चलो शुरू करते हैं. बट शुरू करने का एक डिसीजन लेना, कंपनी ने थोड़ा सा पैसा इक्विटी में डाल देना,
वर्सेस एक्चुअली चालू हो जाना बहुत डिफरेंट था, बिकॉज देवर कंपनीज हु डिडंट वांट टू टेक द वाउचर, देवर रेस्टोरेंट्स हु डिडंट वांट टू एक्सेप्ट द वाउचर. तो इट वाज ए सॉलिड चिकन एंड एग. इफ सम कंपनी वर टू एग्री ऑल्सो, दे वुड से रेस्टोरेंट्स का है, सिर्फ 10 रेस्टोरेंट्स में थोड़ी हमारे एम्प्लॉयज़ जाएंगे. कोई विरार में रहता है, कोई थाने में रहता है, कोई वर्ली में रहता है. And if I were to go there, they would say, why should we accept who is coming with the voucher? But if you see that in the next 5 years, 25,000 companies in India accepted the voucher. They were giving the meal vouchers to their employees. There were more than 50,000 food outlets which were accepting it across India. And as they say, it almost became parallel currency. It became a huge brand on its own. And it was a B2B business. So to be able to create a brand which people know, remember, it was amazing. And then I innovated the gift voucher, because I thought कि अगर मील वाउचर हो सकता है तो इंडिया में गिफ्टिंग काफ़ी होता है. दिवाली गिफ्टिंग होता है, मैरिज गिफ्टिंग होता है, फाउंडर्स डे होता है, फायर सेफ्टी डे होता है, कुछ ना कुछ गिफ्ट्स कई बार दिए जाते हैं. चैनल पार्टनर्स को गिफ्टिंग करी जाती है, तो प्रोडक्ट दिए जाते हैं. एंड somebody told me that they received some 19 pressure cookers in their wedding. So that triggered my thought कि उसकी बजाय अगर वाउचर होता जहाँ आपके पास चॉइस है तो कितना बढ़िया काम होता है. एंड रिमेंबर आई एम टॉकिंग 1998. Today, of course, there are vouchers for everything, and Amazon vouchers are also there, and lifestyle vouchers are also there. This was 98. Nobody had heard of that. And I called my team, and I had a small team, just about 30 people who were running around selling meal vouchers everywhere. I said, guys, let's tie up with 5,000 outlets and then go to the market. कि ये देखो हमारा जो वाउचर है, Sodexo गिफ्ट वाउचर 5,000 शॉप्स में यूज़ हो सकता है. सो वी डिड दैट, एंड it became a huge success as well. And then I was asked by the company to visit some 35 countries in Europe, Eastern Europe, Latin America, to study the laws and the culture there. क्या वाउचर हम वहाँ फिट कर सकते हैं. उन्होंने सोचा कि ये बड़ा इनोवेटिव सा आदमी है, कुछ ना कुछ ये चला ही देगा. सो आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड ideations and businesses in many countries then, thanks to that. फिर तो ये बहुत टफ जर्नी थी, लेकिन उसका रिवॉर्ड भी इतना ही था कि जो मैंने सोचा था कि भाई नाम हो जाएगा कि इस आदमी ने खुद कुछ करके दिखाया है, तो वो हुआ. एंड फिर उसके बाद मैंने कंपनी को कन्विंस किया कि जो उनका कोर बिजनेस था, विच इज़ कॉर्पोरेट केटरिंग, विच इज़ मैनेजिंग लार्ज किचन्स इनसाइड companies, factories, hospitals, schools, colleges. I said, वो मुझे करने दो. And they literally laughed. They said, you are not a chef, you are an engineer. I said, yeah, but it's okay, I know management, and we'll hire the best of chefs. So Sodexo was word number one in that. And they had been studying the Indian market for 15 years before that. और वो शुरू नहीं कर पाए थे because it was a very cluttered, unstructured market. They set up acquisition targets, but कोई acquisition करने के लायक target नहीं था. सब ग्रे में बिजनेस होता था, पूरे वाइट में होता भी नहीं था. सो आई कन्विंस माई कंपनी, एंड हैप्पी टू शेयर दैट इन 6 years we became the number 1 catering company in India. And then I started facilities management business. We became very large in that. We started smart cards business, solutions for payments inside large IT campuses like Infosys, Wipro, Accenture. That became very large. We were the single largest application of smart cards in India. तो जो भी किया उसमें मार्केट लीडर हम लोग बनते गए, बहुत बड़ी, बहुत प्रॉफिटेबल कंपनी हो गई. एंड आफ्टर 12-13 years इन Sodexo, आई गॉट बोर्ड. आई सेड इतना कुछ कर लिया, एंड अब क्या. यू नो, आई वाज नॉट इवन 40, आई वाज 36-37. एंड आई सेड कि अब 12 साल से लीड कर रहे हैं, बना रहे हैं, सो कुछ नया चैलेंज चाहिए. लैंडमार्क ग्रुप हैड बीन आफ्टर मी. Dubai-based group which has lifestyle stores, Max, Spar, many great concepts, and they wanted to build a hospitality business. And the founder of Landmark Group, Mr. Mickey Jagtiani, he was a visionary, and he said, Ravi, I want to build 100 hotels, 100 coffee shops, 100 restaurants, 100 fun zones, and 100 food courts. And the way you have scaled up Sodexo, I believe you are the one who can do it. So I got excited, and I joined Mickey on this vision, and I think it was one of the best decisions of my life. When I left Sodexo, there were about 28,000 people in my team. I was every day proud of the work we were doing there.
And then I joined Landmark Group and I took a small office in a business center and my knees were shaking on day one कि भाई ये किया क्या है, इतनी मुश्किल से कंपनी बनी थी एंड आई एम बैक अगेन. देन इट हिट मी, ये तो अकेले ऐसे बैठे हैं. बट बहुत ही अच्छा काम हुआ. अगले 2-3 साल में आई अप्रोच शेफ संजीव कपूर एट दैट टाइम कि आपके रेस्टोरेंट्स को स्केल अप करते हैं. हमने येलो चिली रेस्टोरेंट्स बनाए. आज उस चेन में करीब 55 रेस्टोरेंट्स हैं, 55 रेस्टोरेंट्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड in that chain. Gloria Jean's coffees, probably the finest coffee one could get in India. I brought it to India. It was an Australian franchise. We built about 60 outlets. We built fun zones called Fun City that you find in malls. We built City Max hotels in Dubai and Sharjah. तो फूड कोर्ट्स बनाए, पॉलिनेशन, तो सारा कुछ जो सोचा था वो किया एंड बहुत अच्छा हुआ. बट देन द फाइनेंशियल क्राइसिस हिट and the company said that they would not like to expand so much because these are all money sucking businesses and there's a lot of capex. So it was a moment of truth for me. I had some good job offers, but I thought ki I'm turning 40, it's now or never. I have built 5 businesses for Sodexo, 5 for Landmark Group. By and large, each business was different, and I saw the challenge in building each single business every time. ऐसा नहीं था कि मील वाउचर हो गया था तो केटरिंग बनाना आसान था, या कॉफ़ी शॉप्स हो गई थी तो होटल बिजनेस आसान था. हर बिजनेस टफ था, स्टार्टअप की तरह ही करना पड़ा था. एंड समहाउ आई हैड मैनेज टू बिल्ड इट सक्सेसफुली. सो आई थॉट ये स्किल सेट शायद सीख लिया है तो कुछ करते हैं, अपना रिस्क लेते हैं कि. एंड दैट्स व्हेन आई थॉट अबाउट द आइडिया ऑफ वंडर शेफ बिकॉज आई वांटेड टू लेवरेज ऑन सम ऑफ द स्ट्रेंथ्स दैट आई हैड डेवलप्ड एंड yet not compete with the companies that I had worked for. So I thought this will be a good thing. I have gained knowledge on retail, on hospitality, on food, on cooking. We were managing almost 500 kitchens in Sodexo when I had quit. So एक समझ में आ गया है कि फूड होता क्या है. एंड आई कुड सी कि जो डोमेस्टिक किचन में है बहुत कुछ इवोल्यूशन बाकी है, जैसा मैंने पहले बोला सेशन में. So that's how the Wonder Chef idea came up. And I think what I had learned was that if you stay at it, if you're patient, if you're listening to your customers and clients, solutions will come your way. Just be sincere about how you want to do it. Quality बोला है तो quality देनी है, उसके पीछे सर्विस है तो सर्विस पूरी वर्ड्स बेस्ट देनी है, चाहे आप छोटे हो या बड़े हो. एंड कीप क्लोज टू द कस्टमर्स, देखते रहो कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, कीप गिविंग सॉल्यूशंस एंड लुक अहेड इन द फ्यूचर. क्योंकि जो भी हमने पहले किया दैट वाज स्लाइटली लुकिंग अहेड इनटू द फ्यूचर. वाउचर्स था, नोबडी बिलीव्ड, हमने कर दिखाया. स्मार्ट कार्ड्स, फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट, सब कुछ एक तरीके से किया कि जो समय से पहले था. ग्लोरिया जीन्स वॉज द फर्स्ट सेल्फ सर्विस शॉप ऑफ इंडिया, कॉफ़ी शॉप. पीपल सेड कि इन इंडिया में तो लोगों को आदत है बैठ के ऑर्डर करने की, सेल्फ सर्विस कोई नहीं करेगा. एक्चुअली इट बिकेम मोर पॉपुलर बिकॉज ऑफ दैट. बिकॉज यू गो, you could sit in the shop, nobody would question you, which is what now all the youngsters do at Starbucks. Nobody disturbs you. That was not the experience before. और फिर आप जब लेने जाओगे कॉफ़ी, जब when you are ready to order, आपको 5 मिनट में मिल जाएगी. You don't have to keep waiting and waving. So lot of new concepts and I figured कि क्यों चल रहे हैं वो, कैसे चलाने हैं. But persistence is needed, tenacity is needed, which I figured I had. So जब वंडर शेफ शुरू किया तो पता था कि इसको आगे तो लेके जाएंगे. बट या द सक्सेस हैज़ बीन प्रोबेबली बेटर देन व्हाट आई कुड हैव एक्सपेक्टेड एट दैट टाइम. रवि, आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली कि आप नो वन थिंग अबाउट योर सेल्फ कि अगर आप कुछ डिसाइड कर लेते हो तो आप उसको करते ही हो. एंड इट इज़ ऑल्सो क्वाइट you have demonstrated that while you're building Landmark, while you're building Sodexo, and now Wonder Chef. If today we look at the corporate world, if you just scroll LinkedIn, you will hear so many stories of people calling it quits.